Hi to everyone. Namaskar to all the viewers of this channel. My dear students, from now onwards, we are entering into the sixth chapter of your accounting subject in CA Foundation, that is Bills of Exchange. Just now, I explained what are the points to be remembered in Bills of Exchange nearly for more than 1 hour, my dear student, in an introduction session. Who is drawer, who is drawee, what is what we call the due date of a bill, how to ascertain it, what to do when it is endorsed, when it is discounted, when it is sent to bank for collection, retirement of a bill and renewal of a bill. All these points are explained, my dear students. Straight away, let us move on to the first problem of this chapter. See, this is a question. While reading a question itself, my dear student, you are supposed to get ready with some working note. Let me tell you how to go for the working note. Okay, now you should have a blank sheet. Read the question and simultaneously you write in a blank sheet. See what happened here. Mr. David draws two bills of exchange. Mr. David draws. When, my dear student, Mr. David draws, see, it is a first problem. I explain in detail, in depth. Drawer. Mr. David draws. Now, who is David? David is your drawer. Okay. See the last para of the problem. You are required to give the journal entries in the books of David. You have to record the entries in books of whom? किसका बुक्स में अकाउंट्स एंट्री रिकॉर्ड करना, डेविड अकाउंट में रिकॉर्ड करना. अब हमें क्या बोलना मालूम? डेविड इज माई सेल्फ, डेविड इज आर सेल्फ, डेविड इज माई सेल्फ. In Kannada we are calling it as Nanu. In Hindi we can call it as Hum. See the three wordings. Who is David? David in Kannada Nanu. David in English myself. David in Hindi हम. हम है. David कौन है? हम है. हमें ड्रॉयर है. हम ड्रॉयर है. Okay. अब लिखना. See my dear student, this is your margin in the notes. Now let me write. Who draws? David draws. What to write? Now let us write. Drawer is equals to David. कौन है डेविड? इन कन्नड़ा नानु, हिंदी में हम, हमें, हमें और हम. ओके. हु इज डेविड? रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, हु इज डेविड? डेविड तो हम है. I use most of English and Hindi language, here and there I use Kannada. Okay, fine. Two bills of exchange कब ड्रॉन किए? On January 2020, 6,000 and 10,000. How many bills? First bill is 6,000. Second bill is 10,000. Did you understood? Who drawn? David drawn. How many bills? Two bills. When the bills are drawn? The bills are drawn on 1st January 2020. Fine. The bills of exchange 6,000 is for 2 months. पहला बिल है ना, उसका ड्यूरेशन क्या है? 3 महीने, 2 महीने, 2 महीने. While the bills of exchange for 10,000 is for 3 months. और दूसरा बिल है ना, उसका ड्यूरेशन क्या है? 3 months है. So now here you have to write 2 months. और दूसरा बिल का ड्यूरेशन क्या है जी? दूसरा बिल का ड्यूरेशन 3 months है. फाइन. These bills are accepted by Thomas. My dear student, who accepted these bills? Thomas accepted. Now who is Thomas? Remember, Thomas is drawee. Who is drawee? Thomas is drawee. क्या लिखना? अब इधर लिखना. Who is Thomas? Who is Thomas? Drawee.
Thomas. In Kannada, Thomas means avanu. In Hindi, उन्हें. उन्हें what? वो है, दूसरा वाला है, अलग वाला है, क्रेडिटर है, वो तो डेटार हो जाता हमको. उन्हें कैसे लिखना? उन्हें means debtor. Because who is drawer? We are the drawer. हमें drawer है, हम तो draw किए. Because we have to pass the entry in the books of drawer. If you have to pass the entry in the books of drawer, जब थॉमस हम हो जाते, ये ड्रॉयर है ना, वो उन्हें हो जाते. उतना सिंपल. प्लीज रिमेंबर, कौन सा बुक में एंट्री डालना है ना, यू शुड समझ लेना दैट पर्सन इज वी. If you are recording drawer is we, hum. If you have to record the entry in the books of Thomas, we are Thomas. That is the only thing. That is the main concept you need to remember. So Thomas क्या होता? Drawee होता. That is nothing but a debtor because he accepted the bill. We are drawer, we drawn the bill. We drawn the bill on Thomas. Thomas is acceptor. Acceptor is nothing but a debtor. That what I explained in points to be remembered. If you didn't go through points to be remembered, you feel so difficulty in understanding the bills of exchange chapter. You have to spend 1 hour in understanding that points to be remembered. Fine. Let us move on to next concept. बाद में देखिए ना क्या हुआ अब. On 4th March 2020, Thomas requested David to renew the first bill. क्या करना? रिन्यू करना. रिन्यू करना बोले तो क्या करना? पहले फर्स्ट बिल को कैंसल करना. क्या करना? कैंसल करना. बाद में सेकेंड बिल ड्रॉ करना. न्यू बिल. वी हैव टू ड्रॉ द न्यू बिल. न्यू बिल इज सपोज टू ड्रॉ विथ इंटरेस्ट ऑफ 18% per annum. कितना परसेंट इंटरेस्ट डालना? 18%. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 months. See how to work out the interest. It is on first bill, right? See my dear student, I am explaining here only. What is the first bill? 6,000. ले लो 6,000. उसका ऊपर कितना परसेंट डालना? 18% डालना. कितना महीने? 2 महीने. Use a calci and workout. Use your calci and workout, my dear student. I am explaining in detail. I am not going with hurry-burry. Please understand. वो तो 6,000 आई पहला बिल का अमाउंट. कितना परसेंट? 18% आई. कितने महीना डालना? 2 महीने डालना. इट कम्स टू रुपीज 180. कितना हुआ? 180 हुआ. नाउ न्यू बिल का अमाउंट कितना होता? न्यू बिल का अमाउंट कितना होता? न्यू बिल का अमाउंट 6,000 प्लस 180 इंटरेस्ट होता. कुल मिला के न्यू बिल का अमाउंट कितना हुआ? 6,180 हुआ. ये 180 क्या होता? ड्रॉयर को. ये 180 ड्रॉयर को इनकम होता. इनकम किधर आता? अकॉर्डिंग टू 5 स्टार क्रेडिट साइड में आता. मालूम हुआ या नहीं? बोलना प्लीज. ऑन 4th March 2020, थॉमस रिक्वेस्टेड डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल. और रिन्यू करने के लिए पूछ रहे, रिक्वेस्ट कर रहे. ओके. व्हेन इट इज रिन्यूड, फर्स्ट बिल कैंसल हो जाता. बिकॉज फर्स्ट बिल कैंसल हुआ तो सेकेंड बिल ड्रॉ करने के लिए I mean what we call options is there. While drawing the second bill, कितना परसेंट इंटरेस्ट डाले? 18% इंटरेस्ट डाले. कितना परसेंट इंटरेस्ट? 18%. For how many months? For 2 months extra. For that interest is 180. 180 is a income to the drawer. David agrees to this proposal और David accept किया. न्यू बिल भी ड्रॉन हुआ. अब shall I write? When request किए? When request किए? On 3rd March 2020. Let me write. On 3rd March 2020, first bill renewed. First bill renewed means क्या करना अब? A point. Cancel the first bill. बाद में न्यू बिल ड्रॉ करना अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. न्यू बिल ड्रॉ
न्यू बिल along with इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट कितना होता? इंटरेस्ट कैंसल द न्यू बिल, मीन ओल्ड बिल. फर्स्ट बिल कितना है? 6000 है. वो कैंसिल करना, उसमें इंटरेस्ट डालना, कितना परसेंट? 18%. कितना महीने? 2 महीने. 2/12 इट कम्स टू 180. नाउ न्यू बिल इज व्हाट? ये तो न्यू बिल ड्रॉ करना है ना. न्यू बिल का अमाउंट कितना हुआ अब? 6000 प्लस 180. 6180 हुआ. डिड यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई एक्सप्लेन्ड? फर्स्ट बिल कैंसिल करना, सेकेंड बिल ड्रॉ करना, ड्रॉ करने के टाइम इंटरेस्ट डालना, और इंटरेस्ट 180 होता, और 180 क्या होता? ड्रॉयर के लिए इनकम होता. ड्रॉयर के लिए क्या होता? 180 ए ड्रॉयर के लिए इनकम होता. इनकम मीन्स इट कम्स इन द क्रेडिट साइड. ओके, बाद में देखिए ना क्या हुआ. ऑन 20th March 2020 थॉमस रिटायर्ड किया. क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000. 10,000 बोले तो कौन सा बिल? सेकेंड बिल रिटायर्ड किया एट द रिबेट और डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज. ओ क्या किए उन्हें? सेकेंड बिल रिटायर्ड हुआ. सेकेंड बिल रिटायर्ड हुआ. रिटायर्ड मीन्स व्हाट? गिविंग द अमाउंट टू द ड्रॉयर बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी. when it is given, when it is discharged before the date of maturity, ड्रॉयर हैज टू गिव रिबेट टू ड्रॉई. क्या करना? ड्रॉयर रिबेट देना, कम पैसे लेना. कितना है? सेकेंड बिल 10,000 का है. ये 10,000 में 100 रुपीज क्या है? रिबेट है. मीन्स रिबेट माइनस करना. माइनस किया तो कितना आता? 9,900 आता. दिस इज कॉल्ड कैश रिसीव्ड. ये रिबेट तो एक्सपेंसेस है. किसको? ड्रॉयर के लिए. दिस इज व्हाट द रिबेट इज. माय डियर स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टूड? ऑन 20th March 2020 थॉमस रिटायर्स द सेकेंड एक्सेप्टेंस फॉर विच 100 रुपीज रिबेट इज गिवन. लेट अस राइट. कब हुआ ये? 20th March 2020 में हुआ. लेट मी राइट. On 20th March 2020, second bill retired. Second bill retired means here तो rebate है. Second bill का amount कितना है? Second bill का amount is 10,000 है. इसमें rebate कितना है? 100 है. Then what is cash received? कैश रिसीव्ड तो 9,900 है. दिस रिबेट इज डिस्काउंट एक्सपेंसेस टू द ड्रॉयर. एक्सपेंसेस टू हुम? ड्रॉयर. रिमेंबर, ये तो रिबेट हुआ. सेकेंड बिल खत्म हो गया. बाद में क्या हुआ? सी हियर. बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल. रिन्यूड बिल मीन्स व्हाट? न्यू बिल. थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट. कौन इंसॉल्वेंट हुआ? थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट. Who is Thomas? डेटोर. डेटोर क्या हो गया? इधर इंसॉल्वेंट हो गया. डेटोर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया. 50 पैसे इन ए रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. कितना रिकवर होता? 50% रिकवर्ड होता. अनदर 50% है ना, वो 50% क्या करते हैं? बैड डेट्स करते हैं. थॉमस मीन्स डेटोर, अवनु. Who is Thomas? Thomas is Avanu. In English, he. In Hindi, उन्हें इंसॉल्वेंट हो गया. अब क्या करना? लिखना और एक बार. when Thomas become insolvent, डेट दिए है क्या? डेट नहीं दिए. So now we have to write Thomas insolvent. Thomas बोले तो in Kannada avanu, in Hindi उन्हें, in English we can write he is insolvent. कब? Before the due date of the renewed bill. देखिए ना, renewed bill कब ड्रॉ किए?
3rd March 20 को ड्रॉ किए. For how many months? Draw a new bill for 2 months है ना. You have drawn a new bill for 2 months. हम तो मार्च में है, मार्च से 2 महीने, अप्रैल में 3rd date है. How many grace days we have to add? 3 grace days we have to add. Means it comes to 6th May 20. 6th May 20, right? On what date it is drawn? ये तो 3rd March का है ना. Oh, not 3rd March, it is on 4th March. 4th March means कब होता है? 7th May होता. थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट. थॉमस इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या करना पहले? ए पॉइंट. कैंसल न्यू बिल. न्यू बिल का अमाउंट कितना है जी? न्यू बिल का अमाउंट 6180 है. लिखना वो 6180. बाद में क्या करना? बी पॉइंट. 50% रिकवर्ड. Recovered means cash increase होता. What is the 50% of 6180? 3090. Another 50% is bad debts. वो bad debts कितना हुआ? 3090 हुआ. कुल मिला के कितना हुआ अब? 6180 हुआ. This is what the working note is, my dear student. Now we have to start passing the journal entries. Write the heading. Journal entries in the books of David. Who is David? David is drawer. Shall we start passing the journal entries? Just you see the working note, nothing else. Just you go through the working note. पहले कौन सा डेट? जनवरी 2020. Let us write 1st January 20. क्या किया आपने? 2 bills are drawn. What you drawn? Bills are drawn. When bills drawn, bills receivable increased. Debtor. Who is debtor? Debtor is Thomas. Thomas decreased. When BR increased, it is to be debited. Thomas is to be credited. Please remember, I am explaining in detail, my dear student. This is the first problem. When the bills are drawn, bills receivable increased, as an asset increased the debit, Thomas is a debtor, debtor decreased the credit. For this journal entry will be bills receivable account debit to Thomas. How many bills you drawn? 2 bills. Let us write. First, bills receivable account debtor, auto 6000 high. Second, bills receivable account debtor, वो तो 10,000 है. टू थॉमस अकाउंट 16,000 हुआ. बीइंग टू बिल्स आर ड्रॉन हुआ. आफ्टर एवरी एंट्री आई यूज टू क्लोज द पर्टिकुलर्स कॉलम. ओके, हो गया. ये तो एंट्री हो गया. अब बाद में क्या करते हैं? फर्स्ट बिल रिन्यू करना. फर्स्ट बिल रिन्यू करना बोले तो क्या करना? फर्स्ट बिल को कैंसिल करना. व्हेन यू कैंसिल द फर्स्ट बिल, व्हेन यू कैंसिल द फर्स्ट बिल, प्लीज रिमेंबर डेटॉर इंक्रीज्ड. डेटॉर मीन्स हूम? थॉमस. ही इज टू बी डेबिटेड. फर्स्ट बिल कैंसिल हुआ तो बी आर डेटॉर इंक्रीज्ड. वो तो बिल हमारे पास ही है ना. बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज्ड क्रेडिट. Just it is a reverse of the drawn entry. When you drawn, BR account debit to debtor. When it is dishonored, when it is cancelled, debtor account debit to BR account. कब? 4th March 2020 को. कब? 4th March 2020. क्या हुआ अब? थॉमस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट बिल रिसीवेबल अकाउंट. कितना है वो? 6,000 है ना. बीइंग फर्स्ट बिल
cancelled. मालूम हो रहा थोड़ा थोड़ा? It takes a lot of time, my dear student, to understand the logic. Always connect with 5 stars. Okay, fine. अब तो आप फर्स्ट बिल कैंसिल किया. फर्स्ट बिल क्या किया आपने? कैंसिल किया. फर्स्ट बिल कैंसिल किया तो बाद में क्या करते हैं आप? You are drawing a second bill. You are drawing a new bill. What you people are doing? You are going to draw a new bill. Fine. New bill is drawn with what? Along with interest. New bill में क्या है? In new bill you have a interest. Interest of how much? In new bill you have an interest. Interest of how much? 180 rupees. ये तो इनकम हुआ. अब क्या हुआ? न्यू बिल ड्रॉ किया तो सेम आंसर. बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज होता, डेटॉर डिक्रीज होता. बिल्स रिसीवेबल डेबिट, थॉमस क्रेडिट. इधर इंटरेस्ट है ना. इंटरेस्ट इज व्हाट? इनकम. इनकम भी क्या करना? क्रेडिट करना. जब एंट्री क्या होता? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6180, टू थॉमस अकाउंट 6000, टू इंटरेस्ट अकाउंट 180. क्या लिखना अब? कौन सा डेट हो? द डेट इज ऑन सेम 4th March 2020. That is न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. इधर 6000 बिल का अमाउंट, 180 इंटरेस्ट का अमाउंट, 6180 डैश टू थॉमस अकाउंट डैश 6000 टू इंटरेस्ट अकाउंट डैश 180 बीइंग न्यू बिल ड्रॉन. क्या लिखना नरेशन? बीइंग न्यू बिल ड्रॉन. Being new bill drawn. Fine. After that, when the new bill is drawn, just you go through your adjustment, nothing else, my dear children. Okay. Fine. बाद में क्या हुआ? Second bill is retired. Second bill retired means what? You have received the cash. When you received the cash, your cash increases, it is to be debited. The debit is a expenses, it is to be debited. What happened? Second bills receivable decreased, it is to be credited. You have received money from second bill. Please remember, when the second bill is retired, it means we received money from the second bill. Cash increased debit, rebate as a expenses debit, second bill decreased credit. Now your journal entry, on which date, my dear student? The date is on 20th March 2020. What date? 20th March 2020. 20th March 2020. What you received? Cash. Don't use bank, use a cash. Cash account debit, rebate account debit, to second bills receivable account. Being second bill retired. How much cash you received? 9900, rebate is 100, कुल मिला के second bill का amount 10,000 हुआ. That is what you received the amount of second bill. बाद में क्या हुआ? On 7th May 2020, Thomas becomes insolvent. When Thomas is insolvent, cancel the new bill. When you cancel the new bill, what happened? Again debtor increased, new bill decreased. Debtor increased means debit, new bill decreased means credit. कब? 7th May को. क्या लिखना अब? 7th May 20. That is what? Thomas account debit, Thomas account debit to new bills receivable account. How much? It is of rupees 6180 dash 6180 being new bill cancelled.
Why new bill is cancelled? Because the Thomas becomes insolvent. वो इंसॉल्वेंट होने के बाद आपने क्या किए? ये भी एंट्री हो गया. इंसॉल्वेंट होने के बाद आपने क्या किए? You have recovered 20% from his private estate. When you recovered from private estate, your cash will increase. It is to be debited. You have a bad debts. Bad debts is a expenses that is to be debited. You have recovered from whom? We have recovered from Thomas. Thomas is to be credited. Please try to understand. I am explaining in detail for a small kid. Okay. I like this. Like this, we have another 2-3 problems. Try to understand in those videos also. But try to understand here what actually Sudhakara is going to tell you. 50% recovered bole to, you are recovered from Thomas from his private estate. When you recovered from private estate, you will be receiving money from his private estate. Your cash will increase. Asset increase हुआ तो डेबिट करना. बाद में बैड डेट्स है. बैड डेट्स बोले तो एक्सपेंसेस बोलते हैं. एक्सपेंसेस को डेबिट करना. You recovered from whom? From Thomas private property. Thomas is to be credited. Then journal entry is what? Cash account debit. Bad debts account debit to Thomas account. Cash account debit, bad debts account debit to Thomas account. Shall we write? That is on the same date, right? 7th May 2020. That is, sir, shall we use bank? Please, in this chapter, don't use bank, especially use a cash. Cash account, when to use bank? Only when it is discounted with bank. Cash account debit, bad debts account debit to Thomas account. How much amount? 3090 dash 3090 dash 6180 being 50% recovered from his private estate. That's all, my dear student. This completes the answer. I hope you people understood. Please go through it very carefully. It's an interesting chapter. We can understand very, very easily, provided if you understand the problem very clearly. Okay. Thank you. Take care. Namaskar. Bye bye.